Okay. The next topic under this module is the type of the lighting scheme. Okay. So basically, the different types of the lighting scheme is defined based on the theory or based on the you can say the assumption that whenever a light source is producing light, okay, it is illuminating, then all the lumens is not reached up to the working plane. Okay, some lumens will reach up to the working plane and some will go into the surroundings, or sometimes some lumens will reach to the working plane through reflection. Okay, अगर किसी बल्ब को ऑन करते हैं किसी कमरे में, तो अगर वर्किंग प्लेन हमारा एक टेबल रखा हुआ है तो वहां पर लाइट या तो डायरेक्ट आ सकता है या तो रिफ्लेक्ट होकर के वॉल्स के थ्रू उस वर्किंग प्लेन पर आएगा, और it may be the combination of the direct or the reflected light. Okay, so based on this assumption, the different types of the lighting schemes are: the first one is direct lighting. Direct lighting कहने का क्या मतलब है हमारा? In this case, the light from the source is thrown directly over the surface to be illuminated. Okay, अगर बल्ब से लाइट डायरेक्टली हमारा सरफेस पर आ रहा है, ठीक है, सो दैट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट लाइटिंग. ओके, it is such type of the lighting scheme is particularly used in industry for high intensity of light. Obviously अगर डायरेक्ट लाइटिंग है, डायरेक्टली लाइट हमारा इस वर्किंग प्लेन पर अगर अवेलेबल हो रहा है लाइट ऑन करने पर, दैट मीन्स द इंटेंसिटी इज मोर, इंटेंसिटी इज हाई. Okay, so this type of the lighting scheme we are using in industry, okay, where we require the high intensity of the light. The second one is indirect lighting. Indirect lighting क्या है? In this case, no light reaches directly from the source on the surface to be illuminated. Just reverse of the direct lighting. डायरेक्ट लाइटिंग के केस में हमारा सारा का सारा जो भी लाइट आ रहा था वो डायरेक्टली वर्किंग प्लेन में आ रहा था, बट इन केस ऑफ द इनडायरेक्ट लाइटिंग नो लाइट रीचेस डायरेक्टली. जो भी लाइट आ रहा है थ्रू रिफ्लेक्शन. लाइट ऑन किए, वॉल्स में रिफ्लेक्ट हुआ, वॉल्स के रिफ्लेक्शन के थ्रू वो हमारे टेबल तक लाइट पहुंच रहा है, डायरेक्टली लाइट नहीं आ रहा है. अगर ऐसा सिचुएशन है तो that comes under the category of indirect lighting. Okay, so we may use a light which is focusing towards the ceiling of a room. Okay, then in that case the light will reach to the table through reflections. Okay, सीलिंग के पास अगर हम लोग उसको फोकस करके रखें उसका काफी नजदीक, तो क्या होगा, लाइट डायरेक्टली तो हमारे नहीं आएगा टेबल के पास, वो रिफ्लेक्ट होकर के ही आएगा. okay? अगर इस तरह का लाइटिंग अरेंजमेंट हम लोग करते हैं तो दैट विल वी विल कॉल द इनडायरेक्ट लाइटिंग. ओके, बेसिकली इस तरह का लाइटिंग स्कीम देखने के लिए हम लोगों को कहाँ मिलेगा? हॉल, क्लब, रेस्टोरेंट. ओके, वेयर वी आर नॉट गेटिंग द लाइट डायरेक्टली फ्रॉम द लाइट सोर्स, we are getting in the reflected way. Clear the difference between the direct and the indirect lighting? Next one is semi-direct lighting. If the percentage, if we talk about the percentage, if more than 60% of the light will reach to the surface directly, okay, so that comes under the category of semi-direct lighting. Okay? If we switch on a bulb
and more than the 60% of the light will reach to the working plane directly, and the rest 40% will reach through reflections, then that type of the lighting scheme will come under the category of semi-direct lighting. Okay, and if the situation is reverse, it means if more than 60% of the light will come after reflection to the working plane and less than 40% will come directly to the working plane, then that type of the lighting scheme will called the semi indirect lighting scheme. Okay, so these are the main four types of the lighting schemes: direct lighting, indirect lighting, semi direct lighting, and semi indirect lighting. Very simple definitions. Okay, apart from these four types, we are also uh, using two different types of the lighting scheme. Okay. You will find in the literature these two types of the lighting scheme also. The first one is the local lighting and the second one is general lighting. Okay. What is the meaning of this local lighting? If the light is confined to illuminate a particular object, it is called the local lighting. अगर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करना है, उसी को फोकस करके अगर हम लोग किसी लाइट को हम लोग डिजाइन कर रहे हैं या उस लाइट को वहां पर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लोकल लाइटिंग. ओके, लाइक अ टेबल लैम्प. ठीक है, टेबल लैम्प इज very much focused to the book which is kept on the table. Okay. So you may call it as a local lighting scheme. Okay. General lighting. What is the meaning of this general lighting? It means this lighting scheme is designed for the general purpose. Okay. अगर कोई एक बड़ा हॉल है, okay, और उसके अंदर में डिफरेंट लाइट सोर्सेस अवेलेबल है, बट क्या हो रहा है कि हर एक लाइट सोर्स का अपना एक एरिया है, जिस पर्टिकुलर एरिया को वो इल्यूमिनेट कर रहा है, बट इन बिटवीन those areas there are some dark patches or there are some area which is getting a very less light. Okay, वहां पर लाइट का इंटेंसिटी कंपेयर टू द अदर एरिया वो कम है. अगर वैसे सिचुएशन को अगर इमेजिन करो, ठीक है, तो such type of the lighting scheme is called the general lighting. That means the lighting scheme is not proper, it is very general. Okay, कहीं कहीं भी एक एक हम लोग लाइट सोर्स को इंस्टॉल कर दिए है, बट इक्वल इल्यूमिनेशन हर एक एरिया में नहीं मिल रहा है. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इल्यूमिनेशन इन द कंप्लीट हॉल. ठीक है, अगर इस तरह का हमारा सिचुएशन है, सो दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल लाइटिंग. ओके, so these are the different types of the lighting schemes. Any question related to this lighting scheme? It's a very simple definition. Yeah? Yeah. I don't think that there will be much more difficulty to understand these lighting schemes. Okay. That you are also seeing in daily life. Okay, डे टू डे लाइफ में इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं. Okay. So that is just a part of the different lighting schemes. Okay. So what are the different methods we are using for calculation of this light? Okay. कितने lumens
रिक्वायर्ड है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए, ठीक है? किसी एक हॉल में कितने लाइट सोर्स का इंस्टॉल करने की जरूरत है सो दैट per square area this much illumination will be available. तो अगर इस तरह के चीजों को अगर कैलकुलेट करना हो, so we can use one method that is called the light flux method. Okay, लाइट फ्लक्स मेथड क्या है हमारा? बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों को निकालना है कि ल्यूमेंस विच इज रिसीव्ड ऑन द वर्किंग प्लेन, ठीक है? अगर कुछ लाइट सोर्सेस किसी हॉल में, अगर 10 सपोज 10 लाइट सोर्स है, तो सबको अगर हम लोग ऑन करते हैं, ठीक है, तो क्या वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लुमेंस विच इज रिक्वायर्ड to reach at the working plane, whether that 10 light bulbs are able to produce that much lumens. Okay. Or in another way you can think that in a hall an object is kept and this much lumens is required for that object. Okay, so how many number of bulbs is required to install in that hall so that this much lumens will reach to that particular object. Okay. अगर इस तरह से हम लोग को कैलकुलेट करना हो, so we can calculate with the help of this expression. Okay, this simple equation. इक्वेशन कुछ नहीं है, हम लोग जो पहले न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं बेसिकली वही है, ठीक है? मेथड इज सेम, द प्रोसेस इज सेम टू कैलकुलेट द ल्यूमेंस received on the working plane. Okay, that is equal to number of lamps into wattage of each lamp multiplied with the efficiency of each lamp, and that is also multiplied with some factors. What are those factors? The coefficient of utilization into maintenance factor divided by the depreciation factor. Okay. So if the number of lamp is 10 and the wattage of each lamp is suppose 40 watt, so how much it will be? 10 into 40, it is 400 into efficiency of each lamp. Efficiency is suppose again 40 lumens per watt. Okay, it is incandescent, sorry, it is a fluorescent tube. Okay, so it is 10 into 40 into 40. So how much this will be? 400 into 40, 16,000. So 16,000 multiplied with the coefficient of utilization, maintenance factor, and the depreciation factor. If we know these factors, okay, then we can find out the lumens which is received on the working plane. Okay, so in this way we can calculate the lumens which is received on the working plane, or the number of the lighting sources which is required to provide a sufficient light on the working plane. Okay, so this is one method. Another method we have already seen, the inverse square law method. Okay, एक न्यूमेरिकल हम लोग देखे थे कि दो लाइट सोर्स थे, तो एक लाइट सोर्स के नीचे कितना ल्यूमेंस आ रहा है, okay? तो दोनों लाइट सोर्सेस का इफेक्ट क्या था, तो ये सारे हम लोग देख चुके हैं प्रोसेस कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो एक इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड था। ठीक है, तो ये दो मेन मेथड है हमारा लाइटिंग कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, एक न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड, so that we can understand this steps in very clear manner. Okay, ये एक न्यूमेरिकल है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। An illumination of 30 lux is to be provided in a classroom of area 20 meter into 10 meter with 40 watt fluorescent lamp.
40 वाट का फ्लोरेसेंट लैंप है। तो हम लोगों को एक क्लासरूम है जिसका कि एरिया 20 मीटर इंटू 10 मीटर है, उसमें 40 वाट के फ्लोरेसेंट लैंप को इंस्टॉल करना है। उसको इस तरह से इंस्टॉल करना है कि 300 लक्स, दिस मच इल्यूमिनेशन is available in the classroom. Okay. Determine the number of layout of the lamp in the lighting installation. So कितने फ्लोरेसेंट लैंप को हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो फ्लोरेसेंट लैंप को कहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है। क्वेश्चन इज क्लियर? We have to find out the number of fluorescent lamp which is to be installed in a classroom of 20 meter into 10 meter so that an illumination of 300 lux will be provided. Okay. Fluorescent lamp का rating क्या है? 40 watt and the coefficient of utilization is given 0.5 and the depreciation factor is 0.7 is also given. Okay. So let us see how we will calculate the number of lamp. Area is given 20 into 10, that is 200 meter square. Okay. Illumination is given 300 lux and the wattage of the fluorescent lamp is given 40 watt. So flux required is illumination into area into A, that is equal to 60,000 lumens. So 60,000 lumens is will be available. Okay. So flux which is necessary to be produced, कितना flux produce करना पड़ेगा? Since the coefficient of utilization and the depreciation factor is given, so divide this 60,000 from this coefficient of utilization and depreciation factor. Okay. And if we talk about the wattage, okay, then wattage of the lamp will be how much? This total flux divided by this efficiency. Okay. So it is 4,000 watt. Efficiency is what? Output by input. Efficiency is given 40 lumens per watt. So it is output by input. Output is how much? Output is this 60,000, which is the total lumens divided by input. So this will be the input, 4,000 watt. So 4,000 watt is the input. That means what should be the number of bulbs so that the total input will be 4,000 watt. We know that the rating of one bulb, that is 40 watts. So total number of bulbs will be 4,000 divided by 40 equal to 100. So 100 bulb we need to install in this classroom of area 20 meter into 10 meter so that an illumination of 300 lux will be available. Okay. So the second part of this question is how we will install or where we will install. Okay. कहाँ इसको install करना पड़ेगा ये 100 bulbs को. Okay. So if we consider a situation that is not given in the question, okay, but if we assume that this fluorescent lamp is a combination of two lamps, okay, one lamp is a combination of two. ट्यूबलाइट देखते हो ना कि एक साथ दो ट्यूबलाइट को हम लोग इंस्टॉल करते हैं, उसको हैंग करते हैं, ठीक है, अगर उस तरह का हमारा ये है कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उस तरह का अगर हमारा लाइटिंग स्कीम है जिसको डिजाइन किया गया है, सो नंबर ऑफ पेयर कितने होंगे? इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक में हमारा दो फ्लोरेसेंट लैंप है, सो इट इज 100 बाय 2, दैट इज 50. एंड हाउ वी विल install these 50 lamps? So it is installed like this. Okay, 10 bulbs in a row, so there are 5 different row, so that 50 pair of lamp will be accommodated. And what should be the distance between each lamp? It is 2 meter.
horizontally and 1 meter vertically, so that it will cover the whole area, 20 meter to 10 meter, equally distributed. You can equally distribute in this manner. Okay. So like this,